of India these days. So today we have a very reputed choreographer of Haryana with us to train us, a very efficient moderator, Dr. Kavita Yadav with us, and very wonderful and excellent coordinators of Cultural and Literal Committee, Dr. Swati and Dr. Karivi Joshi with us to coordinate the program. So I'll not come in between you and the dancing. I'll again hand over the mic to Dr. Swati for the further proceedings. Over to you, Swati. Navratri festival, an important Indian festival, lasts for 9 days and 9 nights. These 9 days symbolizes power of various Daivi Shakti like Antarmukta Sakshi Hone ki Shakti, power to detach from Parvati Devi, Sametne ki Shakti, power to let go from Ma Durga, Sahan Karne ki Shakti, power to tolerate Ma Jagat Amba, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट संतोषी माँ, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न बाय गायत्री माँ, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड सरस्वती देवी, समाने की शक्ति, पावर टू फेस और सामना करने की शक्ति काली माँ, एंड सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट बाय लक्ष्मी देवी. May Ma bestow her all forms of blessings, peace, power, prosperity, purity, health, happiness, harmony, wisdom, strength, courage, commitment, joy, wealth, and bliss for you and your family. To celebrate this festival, we play Garba and Dandiya. Though it is started from Gujarat, but it has spread beyond borders to UK and USA also. Preparation for celebration of Navratri starts 1 to 2 months before the actual festival comes. To add momentum to all your presentation, we have planned today's workshop, Navratri Dandiya Bits. Today we will learn few basic steps of Garba and Dandiya, and we all will perform those steps on few lines of Garba and Dandiya too. हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है. सजा लो दरबार, माँ अम्बे आने वाली है. तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, माँ के कदमों की आहट से गूंज उठेगा आनंद आंगन. आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं. Now I invite Dr. Kavita Yadav Madam. She is a senior ophthalmologist, Haryana Chairperson, Women Doctors Wing, IMA Haryana, past President, IMA Rewari, YouTube creator of 2 channels with many followers and viewers for music and dance. She is moderator of today's workshop, Navratri Dandiya Special. Over to Dr. Kavita Ma'am to elaborate on workshop and conduct further proceedings. Madam, floor is yours. I'll just interrupt for a minute. We have Dr. Smita Lele ma'am with us. She has joined us. Welcome ma'am to our platform and a very good evening to you. Dr. Rohini madam also has joined. Welcome Rohini. Avnish also. Yeah. Welcome all. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Over to Kavita. Please start. Good evening, everyone. I am Dr. Kavita Yadav. और मैं आज आपके डांस इंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, मिस्टर पवन कुमार, who is a choreographer in various dance forms of Bollywood, hip hop, semi-classical and folk dance. और वो हमारी IMA के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं और डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में डांस के टीचर हैं और उसके बाद वो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं. आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मिस्टर पवन कुमार से. गुड इवनिंग एवरीवन. आज हम आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में गरबा और डांडिया सिखाने वाले हैं और
स्टेप्स के माध्यम से ही हम पहले म्यूजिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम एक सॉन्ग के मुखड़े को लेंगे। इसके लिए हमने बहुत ही प्यारा सा गाना चौगाड़ा तारा चूज किया है। तो आइए सब लोग अपनी डांडिया स्टिक्स उठाइए और हमारे साथ ज्वाइन करिए। Over to Pavan now. Everyone, holding your dandiya sticks, fix your camera and take position. सबसे पहले हमारे दोनों हाथ पीछे रहेंगे, दोनों हाथों में एक एक डांडिया पकड़ लेना है। पहला स्टेप हमारा राइट जाता है, राइट जाएगा ओब्लिक में 1, then left 2, now back 3 and 4। हम जहां से स्टार्ट किया था हमने वापस वहीं जाकर पहुंच गए हैं। वापस से अगेन 1 2 3 and 4। आफ्टर दैट स्टेपिंग यही रहेगी, इसके साथ हमारे डांडिया चलेंगे। पहला स्टेप हमारा राइट हुआ था तो हमारा डांडिया बढ़ते हुए राइट नीचे 1, then left 2। अब बैक जाने के लिए वापस कमर पे आ जाएंगे हमारे डांडिया 3 and 4। ये स्टेप 2 टाइम्स है। इस डांडिया को 2 टाइम्स रिपीट करना है। डांडिया के स्टेप को 1 2 3 अगेन 5 6 7 and 8। हमारा 8 हमारे ओब्लिक लेफ्ट में खत्म होगा। लेफ्ट साइड में ही अब इसके बाद 6 टाइप डांडिया को रोल करना है। 1 2 3 4 5 6। दोनों डांडिया लेफ्ट में ऊपर जाएंगे 7 8 पे और हमारा राइट लेग उठेगा 7 8। नाउ राइट 1 2 3 4 5 6। अब हमारे डांडिया ऊपर तो जाएंगे बट लेग नहीं उठेगा। बजाने के लिए 1 2 3 4। अगेन हमारा स्टेप लेफ्ट में खत्म हुआ तो लेफ्ट में ही डांडिया को बजाना है, बट अब इसके साथ हमारा राइट लेग भी चलेगा। 1 2 3 4 हमारा इस पोज पर खत्म हुआ तो राइट लेग चलाते हुए राइट हैंड को बेंड करना है। 1 2 3 4। अगेन स्टेप रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8। फिर से एक बार सीक्वेंस रिपीट करता हूं। काउंट से स्टार्ट किया हमने, दोनों डांडिया को बैक में पकड़ा हुआ है। पहला स्टेप जाता है राइट ओब्लिक 1 2, then left 3 4, back 5 6 7 8। 7 8 के बाद अब हमारी इसी स्टेपिंग के साथ हमारे डांडिया चलेंगे 1 2 3 अगेन 5 6 7 8। 8 के बाद मैंने बताया था जिसकी डायरेक्शन में हमारा खत्म हुआ उस टाइप में 6 टाइम्स डांडिया को रोल करना है रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डांडिया ऊपर लेग के साथ 7 8। then right 1 2 3 4 5 6। अब हमारे डांडिया ऊपर जाएंगे बट 1 2 3 4। डांडिया बजाने के बाद लेफ्ट में खत्म होता है तो लेफ्ट में जब लेग के साथ 1 2 3 4 रोल 6 7 8। अगेन 1 2 3 4 5 6 7
सीक्वेंस को हम म्यूजिक पर करते हैं। रेडी एवरीवन? एक बार फिर से म्यूजिक पर ही। रेडी एवरीवन? स्टॉप। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लकी को वो एक वीडियो भी चला देगा सो दैट एवरीबॉडी कैन डांस टुगेदर विद अस। Clear to everyone? Hope it is clear to everyone. Okay. Yeah. Yes, madam. Yes. Okay, sure. We will go on to the Mukhra now. इसे शुरू करते हैं। Yes. हमारा लास्ट स्टेप मैम यहाँ खत्म हुआ ए। अब यहाँ से हमें राइट हैंड के डांडिया को लेफ्ट से बजाकर ओपन करना है। वर्ड आएगा आई गई रात। उसके बाद दोनों हैंड के डांडिया को क्रॉस करके शोल्डर पे रख लेना है। 5 6 7 8। अब दोनों हैंड तक क्रॉस हो गए, इनको ओपन करना है। 1 2 3 4। बट चलते हुए हैंड क्रॉस से 1 2 3 4। हैंड से बुलाते हुए पहले लेफ्ट से बुलाना है। 1 2 3 4। अगेन ये 4 स्टेप्स अगेन। हमारा म्यूजिक यहां खत्म हुआ। राइट हैंड से डांडिया बजाते हुए राइट हैंड को पूरा ओपन किया। उसके बाद हमारे दोनों हैंड क्रॉस। अब इन्हें ओपन करना है चलते हुए। 5 6 7 8। आप बुलाते हुए 1 2 3 4। रह जाओ मेरे 5 6 7 8 पे दोनों डांडिया को रोल करना है बुलाने के बाद। 5 6 7 8। ऊपर तक गए, अगेन ओपन होंगे। 1
से रन करना है। 1 2 3 4। अगेन हमारा म्यूजिक पीस यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से वर्ड स्टार्ट होंगे। आई गई रात, मत भूलो मन की बात, प्रेम लिया मौसम छह, अब आओ मेरे पास। साथ में कैसे रहेंगे जब दोनों डांडिया पास होंगे? रह जाओ मेरे पास। प्रेम लिया मौसम के लिए क्या बताया? ओपन करने थे। 1 2 3 एंड रन। इसके बाद यही वर्ड हमें मिलेंगे हैवी बीट के साथ, इसलिए हमें हल्की हल्की जंपिंग करनी है। 1 2 3 4। 4 खत्म हुआ, दोनों डांडिया लेफ्ट में मूव होते हुए राइट एंड अगेन अपोजिट, राइट टू वापस लेफ्ट। आप उस पोजीशन पे है जिस पे हमने पहला स्टेप किया था। 1 2 3 4। रह जाओ मेरे साथ। 1 2 3 4। प्रेम लिया मौसम छह। हमारे दोनों मौसम में क्या डिफरेंस है? पहले में दोनों खुल रहे थे, दूसरे वाले में म्यूजिक के साथ वाले में दोनों एक साथ ही जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां, जो गाड़ा तारा देखो, रंगीला तारा बांधो। अब डांडिया को मैम नीचे से ऊपर उठाना है, ये, और फिर अपोजिट लाना है रिवर्स करके ये। अब जब डांडिया आगे जा रहे हैं तो हमें रन करना है। 1 2 3 4। रिवर्स आए तो रिवर्स। फिर से देखो एक बार, यहां म्यूजिक खत्म हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आया मौसम। मैंने बताया पहले मौसम में तो हमारे डांडिया खुल रहे हैं 4 स्टेप्स पे। देन बुलाते हुए पीछे जाना है। 1 2 3 4। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ। मौसम के लिए पहले 2 पे खोलना बताया था डांडिया को। 1 2 3। बट सेकंड टाइम में 3 स्टेप्स ही है। 4 पे हमारा रन। नाउ वर्ड सेम है, बीट हैवी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां, जो गड़ा तारा बन दो, रंगीला तारा बन दो। नाउ रन। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट डांडिया ओपन, राइट ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। ये स्टेप 3 टाइम्स होगा। 3 4 5 6 7। रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ हमारा गाने का पहला मुखड़ा खत्म होता है। इसको हम म्यूजिक पर करते हैं।
किसी को कुछ रिपीट करना है तो बता सकते हैं प्लीज. Go ahead, Kavita. It's going on smooth. Go ahead, please. Okay, we'll do it once more on the music और फिर लकी प्ले कर देगा मैम. ठीक है. क्लिप विद और सब लोग प्लीज ज्वाइन करें हमारे साथ. Lucky, please play the second clip. तुम्हें देखा मैं
करूं सारी सारी रात, सारी सारी रात। छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। जो गाड़ा तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। जो गाड़ा तारा, ओरे चबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात रे। जो गाड़ा तारा, ओरे चबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात रे। Okay, we are going to play it once more क्योंकि वो थोड़ा सा म्यूजिक उसमें एक लाइन का वो गलत हो गई है, तो we will do it on the music once more. Live. Everyone ready? Start. Okay, now I think it's pretty clear all the steps. Now we will, the last clip is how to adjust these steps on another song. So हमने एक और गाना लिया, हम उसके ऊपर वो सेम स्टेप्स एडजस्ट करेंगे, आप उसे देखिए और उसके बाद हम एक बार आपको लास्ट वीडियो भी उसका दिखाएंगे. So shall we start? Shall we start? Again, sorry.
तेरी मेरी कभी परवाह नहीं दूरी So that's all for today. I hope you like this session. Thank you very much. Over to Dr. Swati. Thank you, madam. Now I'll invite Dr. Kairvi madam to take over and handle the further for proceedings. Thank you. Thank you, Kairvi Ben. Such an excellent, such a joyful, such a vibrant presentation by Dr. Kavita Yadav ji and Mr. Pawan ji. Thank you so much. Congratulations on behalf of all the audience. That was really very nice. You put it in a so simplified way that even a ABC learner can also follow such steps and they can play such step in any upcoming Navratri days as well as in any of their family functions or any of the stage performances. And you incorporated the video clips were also added essence to this workshop. So overall impact was wonderful. We all enjoyed it very much. We learned also very nicely and melodious songs were there. So this hour was full of joy and liveliness. Zestful performances by both of you. Congratulations and thank you so much. I once again request Dr. Kavita to please play again the first basic steps of Mukda because some people have joined a little late. So few basic steps which we started in the program, with the steps. Just play it again. And if Pawanji can tell us just few basic steps which can fit to all the dancing, to all Garba programs, to all the Garba parties and Dandiya dancing. Just 3-4 basic steps. So everybody can dance on those steps. Yeah, that's a good idea, madam. Ma'am, first one is only right leg चलाना है. जब right leg आगे जाएगा तो डांडिया ऊपर होंगे और जब right leg पीछे तो डांडिया ऊपर. Again, 1 and 2, 3 and 4. अभी राइट लेग का बताया, अब राइट लेग को हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं. 1, 2, 3 and 4. मैम डांडिया का बेसिक ये होता है कि दोनों डांडिया दिखने चाहिए. आगे है तो दोनों डांडिया ऐसे बजेंगे. तो 1 ये हुआ, 2 पीछे, 3 ये, 4. अब लेफ्ट में तो दोनों डांडिया बजते हुए दिख नहीं सकते, ऐसे एक ही दिखेगा. तो इस पर्पस के लिए एक ओपन है और राइट ऊपर चलता है. 3 and 4. उसके बाद दोनों साइड को 2 टाइम्स रोल करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहीं से हम एक रोल भी ले सकते हैं. पहला स्टेप करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. पहला स्टेप दिया, दोनों डांडिया आगे बजाने हैं राइट लेग के साथ. 1 2 3 4. अब राइट लेग को क्रॉस करना है. 5 6 7 8. अब दोनों डांडिया को रोल करने के बाद बजाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. चौथा बेसिक स्टेप दिया कि सर्कल लेना है लेफ्ट लेग को सेंटर बनाकर. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 4 बेसिक स्टेप मैम आप किसी भी गुजराती गाने पर कर सकते हैं. हम किसी गाने में करके दिखाएंगे स्टेप्स आपको. बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम.
Great. Great dancing. One more question to Pawan bhai. Pawan ji, if we want to perform in a couple, so amne samne. Second question, with 2 steps, with a 3 tali, and even 6 steps. Can you show us? In a couple, amne samne jo karte hai na? Amne samne और कौन सा मैम? And Amne samne Swati couple ma'am, mein we jo- call it panchu. We call it panchu in Gujarati. That the couple amne samne do it in 5 steps. 5 steps, couple. If one sir can show that step, it will be. Yes, it is good. very common and very basic, which is known to all the Gujaratis. 1, Yes, yes, exactly. and then rotation. Yes, So nice. even you can change the place also. 4th step. 1, ऐसे राइट टच करना होता है, राइट लेफ्ट, फिर दोनों राइट लेफ्ट। अब दोनों डालियां टच होंगे और पीछे वाले हेड को अंदर से घुमाकर घूमना होता है। ये I can come on the other side. नाम दिस वन जो अभी किया। Swati is asking you. I could not hear, madam. Yeah, Mr. Pawan is asking you ki what kind of steps you want. He has just shown the similar step, Panchu, or you want yes, something else. that also, and we can change the partners also. That Yeah, that person can go on the 3rd place, then 5th Yeah, yeah. place. सर्कल में जो है In उसमें both the directions, yes. उसके अंदर बस एक स्टेप चेंज हो जाता है। जो हमने 5 ये किया उसके उसके अंदर हमें 5 ये देना पड़ेगा चलने के लिए। Yes. ताकि हम अगले के पैर के पास पैर पहुंच में, सके। पैर में, yes. मैडम ये वाला कर दीजिए। घूमना नहीं है। 1 2 3 अब आगे बढ़े 5 और 6। Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Swati. Swati and Kairavi, I request to both of you, whosoever want to add something else to this, this very, very important information which we got from both the expert dancers of today's program, Dr. Kavita and Mr. Pawan. So I request Swati again and Kairavi again, as you both are Gujaratis, if you can add anything to this basic steps training. In the I would like to, yeah, okay, Yes, Swati, please go Kairavi ahead. madam, please go ahead. Yeah, okay. The simplest form of the Garba, we do it here without dandiya, that is by clapping. We say teen tali, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It's the simplest form. Then we can do 5 tali, 4 tali, 5 tali, according to the bits on the 4 tali or 5 tali. Then it is a bending one partner just above the head of another partner. So bending and standing, bending and standing. That step can be added in any Prachin Garba. We classify into Prachin Garba and Arvachin Garba. Prachin is the ancient kind of folk dances where the steps are very sharp, very fast, and full of energy. In Arvachin Garba, that is just all the dancing poses. So all movements of the hands, Kathak kind of movements will be there in the Arvachin kind of Garba. So there are 2 types of the Garbas played. Here, every year, inter-college competitions, Mahakumbh, the government is also still programs and competitions. Prachin and Arvachin. So there are 2 types of Garbas we can play. 3 tali, 4 tali, and 5 tali is a Prachin, the ancient kind of Garba step. And with movement of the song, all the hand movement, leg movement, and neck movement that is incorporated in Arvachin kind of Garba. Ras Leela is always fast, along with Kanuna and Radha. Ras songs.
while Mataji's played with talis, and Krishna Radha kind of played with Dandiya Ras. That is usual here in Gujarat. One more thing I would like to add in this, Kairi madams, this Prachin means ancient, two tali, above and below, or either with the movement of hands, legs, and also the waist. So all the ages women can perform this very well, as well as the expressions also. And in Arvachin, most of the time 2 and 3 talis are slow motion Garba. So that shows your leg movement, hand movement, and waist movements along with the expressions. Whereas in Arvachin Garba, they are quite energetic. And nowadays, all the youth people are performing those time. And as Kairvi madam has told that we have this Mahakumbh, in that all the youth, young children, young girls, all are participating everywhere. And government also is promoting that Prachin Garba along with the Aarti, and that are the special varieties of the Garba. But 2 tali, 3 tali, 4 tali, 5 tali, and 6 steps, they are very common. Everyone knows here. So in all the ages, it is very common with a few of the ancient Garbas. जो पुराने गरबा है वो, और मैडम ने जैसे बताया, गैरवी मैडम ने, कि रास लीला जो होता है वो राधा कृष्ण के सॉन्ग्स पे काफी वेरी कॉमन. इन द वृंदावन मथुरा आल्सो दे आर परफॉर्मिंग. So that is very common in Gujarati tradition. Okay. Kairvi, you are not audible. Yes. I would like to add, there are other varieties of Garbas also, like Tippani, that we take a probe, a long stick, that is called Tippani, and a typical Tippani dance is there. Then we are doing Hudo dance. Then in some dances, some Ras Dandiya, these Dandiyas are having a string that is attached on the ceiling, a center part, and all the performers are performing, and a particular design will be formed along with the play of Garba Ras. And finally, there will be a lovely design of all the strings of the Dandiya bound strings. And finally, they detach it and make it individual. That is also a type of Garba. A very expertise and experienced people are required for that. And coach is also different for such kind of Garbas. Great. Can any one of you can show us the 3 tali, 5 tali steps for our audience? Yes, madam. Kairvi madam, get up. You have to have off of your backdrop. Yeah. Kairvi madam, તમે બોલશો કે હું બોલું? केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोर, झीणी झीणी झाड़ियो मुकावी ल्या गरबा, झीणी झीणी झाड़ियो मुकावी रे लोर. Great. अंबे मना गरबा लीधा मा गरबा, अंबे मना गरबा लीधा रे लोर. This is a 2 tali. Okay. Kairvi ben 3 tali. मानो गरबा राजनी दरबार, मानो गरबा रे रमे राजनी दरबार, रम तो काम तारे यो तो सोनी रानी हार, आली सोनी रानी नाथ, तू तो सूती छे के जात, माने पाटे रे रूड़ा झूमड़ा गड़ा, मानी पाटे रे रूड़ा झूमड़ा गड़ा, मानो गरबा रे रमे राजनी दरबार. Wonderful.
And I hope ki all of you must have learned newer things about Garba. As we belong to this north side of India, we don't know such a detail of Garba dancing. Thank you so much, Swati and Kairavi, both Each of you. also. We can Yeah. perform each also. Yeah, please, please, please. Yes, please. yes, we can perform each. બે તાળી આગળ પાછળ હા Ah, કયો ગરબો લઈશું kind of Garba. પાતે ઘરથી ઉતરામાં તાળી લીધા રમવા આવો ને મન ગરબા રમવા લીધા ને આવો ને મા અંબા તે રમવા નિસરામાં કાળી ચરના ચોકવાળી તે ગરબા લીધા રે. This is a heech, typical heech. Okay. All these forms are Prachin Garba. Yes, Yes, Prachin these are Garba. Prachin Garbas. They are quite slow and hand movement, leg movement, waist movement and expressions. Great. So Great. Thank you so much. And Dr. Kavita, do you want to add something more or do you want to know something more from both the typical Gujaratis doctors among us? अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं 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 मैडम नहीं बहुत अच्छे एक्सप्रेस किया है. The selection of songs are also recently since last 2 years only. Very nice steps also. ફેરવી બેન કે એડ કરવું છે? Kairavi's connection is poor, I think. Kairavi is not well connected. Her connection is poor, Swati. You can take over. Shall I conclude, madam? Yeah, please. I think Kairavi's Kairavi connection. madam, yes, Yeah. is not audible. So Am I audible now? yes, yes, Am yes, I audible? yes, madam. Now you Yes, are audible. Okay. yes. Okay. So again, congratulations. Taught us such in a simplified way that everyone can perform in upcoming festivities as well as in any of the social family functions. Even on the stage, they can perform all these steps with suggested songs. So thank you so much and congratulations for giving such wonderful workshop. I request Dr. Divya ma'am, Dr. Divya Saxena madam, who is the chairperson, National IMA Cultural and Literary Committee, to present memento as a token of appreciation to Dr. Kavita Yadav ji as well as to Mr. Pawan ji. Divya madam. Please. Technical team, please show the mementos. Yeah, please show the mementos of Dr. Kavita Yadav. And before handovering the memento, I would like to play the last video of Dr. Kavita Yadav, which she just forgot to get it played. So, Mr. Pawan, please accept a small memento of love and token love from our side, from the National IMA Cultural and Literary Committee. Thank you so much for giving us insights about the basic dancing of Garba and Dandiya. Thank you so much once again. Thank you, ma'am. Now I Dr. Kavita, please request accept this small memento of love and respect from our side. Thank you so much. Thank you, Dr. Kavita. And now I request Divya madam to give vote of thanks. okay, I think one video is left, Dr. Kavita. If you want to play, we can play it again.
Yeah, last clip in which we had adjusted those very steps on a different song. That is just 1 minute. Okay, Lucky, please, technical team, please play that video, the last video of, yeah. Thank you, and beautiful dancing, Dr. Kavita and Mr. Pawan. Once again, a heartfelt thanks from on behalf of the whole IMA National Cultural and Literary Committee, all the members of National Cultural and Literary Committee, all those who have joined us for today's workshop. I hope we could justify the workshop and we have been able to tell you the few basic steps of Dandiya dancing so that you can enjoy all coming festival season. So thank you once again for the wonderful coordinators of today's program, both Dr. Kairavi Joshi and Dr. Swati Popat, for wonderfully adding flavors to today's program and for the wonderful information you have given to all of us. I know that I was unaware of about this information, and I hope most of us must not be knowing about these 2-3 forms of Garba dancing. Thank you so much once again for giving us this vital information. Thank you all the participants. Thank you all the dignitaries who have joined us for today's workshop. And I hope you all will be joining us for next one also, which is again technology on the tips on 7th of October, and timings will be definitely informed to all of you along with the link. Thank you once again for joining us. Thank you so much, all of you, and good night as of now. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Enjoyed a lot. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you, Malinga ma'am. Thank you, Dr. Karan Hi, Punia Malinga sir, madam. Thank you, ma'am. for joining us. Thank you, Thank you, Sushma Diva Chawla ma'am and Swati and Kairavi. Yeah. Oh, All of you, Yeah. thank you. Very well enjoyed, madam. Very well Hi, madam. enjoyed. Yeah. Really good. Malinga madam. Yes. Very informative also. And Please I share the guess recording, we Divya. have many participants. Dr. Punita Hasija ma'am, in spite of she's not well, she's having fracture in her right hand. She has joined us. Dr. Alka Daya, who has joined us. Dr. Rohini Badwe joined us. And Dr. Anita Hana ma'am, Dr. Abha Sethi ma'am, Dr. Pushpinder Kaur, Dr. Yashoda ma'am has joined us. Thank you, ma'am. Dr. Jagat. Madam, during this dancing form, I just, there was one message. Dr. Mala Punjani requested to send clips, but because of dancing all, I missed that message to read. Sure, Kairavi, this program is being recorded and we'll share the recorded link of this program to all the groups. You can forward to all those who want it. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, madam. I can see Dr. Vasanta Kumari ma'am who has joined us. Thank you, ma'am. Dr. Pushpa Singhal, Dr. Poonam Bansal, Dr. Narendra Yadav, so many, Dr. Kokila Patel ma'am, Dr. Srilata ma'am. Thank you so much, ma'am. Dr. Meenakshi, Dr. Mala, Dr. Jagruti, and Dr. MP Lilabi Shakir, Dr. Pushpinder Kaur, Dr. Santwana Sharan. Thank you, Dr. Santwana, for joining us. Dr. Karan Juneja, Dr. Gopalani. Thank you, all of you. Dr. Aditi.
Thank you. Thank you once again and good night. Thank you. Dr. Mrs. Gosai, Thank Mrs. Darshana you. Popat, and so many other also relatives also joined, madam. Dr. Mrs. Gosai also, Jyoti Gosai. Thank you. Thank you. And please Thank you. extend our And we thanks really to all enjoyed of them. today's workshop. Really. Thank you. Thank you for So giving let's meet us again. an Salima opportunity. Bakshi, thank you for joining from Bhavnagar. Hello, Asada ma'am. How are you?